Namaste all. Today we are going to talk about Ayurveda. What is Ayurveda? Ayurveda is an ancient Indian medical science that has served mankind for the past centuries and decades and surely has an golden opportunities in the future with the youthful energy like all of you. And I wish you all the best for entering into this novel field. As we all know, global health is of utmost importance today. भारत सरकार की अनेक योजनाओं में लोकल टू ग्लोबल का नारा दिया जा रहा है। आयुर्वेद ये हमारी खुद की चिकित्सा पद्धति है जिसको अपनाने से हम ग्लोबल हेल्थ का जो मिशन है वो सक्सेसफुल करने में कामयाब हो सकते हैं। Ayurveda is a medical science which believes in treating a disease by eradicating its root cause and not just providing symptomatic relief, which is considered as Shuddha Chikitsa. That's why adapting Ayurveda is a need of future. Thank you. Different career options available after graduation in Ayurveda, like in clinical practice, academics, research, drug manufacturing, and hospital management and administration. In clinical practice, there are different specialties like neurological, skin diseases, gynecological illnesses. Here in Ayurveda, it majorly can be divided into two types, like one for the clinical practice or one for the jobs. When we go into any of the central institutes, that is national institutes, it opens up the newer doorways for opportunities. Like ITRA in Jamnagar, it is now the first INI, that is Institute of National Importance. आप आयुर्वेद में आके जाके अच्छे चिकित्सक, अच्छे एकेडमिशियन, रिसर्चर, एंटरप्रेनर, फार्मास्यूटिकल्स, इसमें आप अच्छा काम कर सकते हो। चिकित्सा में जैसे क्लिनिकल एक्सपोजर से सीख के हमारी जो स्ट्रेंथ पॉइंट्स है चिकित्सा के, जैसे शोधन चिकित्सा, पंचकर्म, अग्निकर्म, क्षारकर्म, इसमें आप आगे काम कर सकते हो। जैसे गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता और गुरु शिष्य परंपरा से ही हमारा आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो चला आ रहा है। तो अब अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हो, उसके बाद आप अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। रिसर्च में आप आर्टिकल पब्लिश करना। I know the fact that most of you haven't came to Ayurveda as a first choice. Neither did I. But after spending 5 years at Tiyag Ayurved Mahavidyalaya, currently I am doing PG at Kattakil in Kerala, which is known to be a land of Ayurveda. Hi everyone, I am a former student of Tiyag Ayurved and right now I am pursuing my Masters in Public Health at University of South Carolina in United States. The most important thing today I want to share with you guys is that give yourself ample time to explore and decide what is that you really want to achieve. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना आयुर्वेदाचे बॅकग्राऊंड नसेल, काही हरकत नाही. पहिले आयुर्वेदाची ओळख करून घ्या अँड यू कॅन एक्सप्लोर अदर ऑप्शन्स ज्यात तुम्ही ट्रॅडिशनल आयुर्वेद प्रॅक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च, स्पेशलायझेशन, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ इन्फॉर्मॅटिक्स किंवा कायरोप्रॅक्टिस यासारख्या असंख्य फील्ड्समध्ये करिअर करू शकता. सो वॉट आय एम डुईंग इज पब्लिक हेल्थ विच काइंड ऑफ रिझेंबल्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ जनपदोध्वंस जे आयुर्वेदामध्ये आहे. सो इट्स नॉट लिमिटेड टू ट्रीटिंग अ सिंगल पेशंट बट समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी काम करणं किंवा संशोधन करणं इज वॉट पब्लिक हेल्थ मीन्स. इट्स व्हेरी ब्युटिफुल फील्ड टू हॅव करिअर इन. सो शेवटी एवढं सांगेल की आयुर्वेद इज लिमिटलेस. तर आयुर्वेद खूप छोटं आणि लिमिटेड नाही आहे. तुम्ही स्वतःहून सगळ्या गोष्टी एक्सप्लोर करायला पाहिजे. जसं माझं पर्सनल फेवरेट रिसर्च आहे. मला असं वाटतं की जेव्हा आयुर्वेद आणि मॉडर्न सायन्स एकत्र येऊन काम करेल तेव्हा खूप जास्ती प्रगती होईल आपल्या शास्त्राची देखील आणि ओव्हरऑलच एक कॉन्ट्रीब्युशन मिळेल मेडिसिनच्या वर्ल्डमध्ये. सो मला पर्सनली रिसर्च खूप आवडतं. तुम्ही स्वतःचं असं टार्गेट काहीतरी एक ठरवा की तुम्हाला काय आवडतं आणि त्यानुसार आपण आयुर्वेदा थ्रू जगाला काय कॉन्ट्रीब्युशन देऊ शकतो ते. थँक्यू.